Keep reading. Force on a moving charge in a magnetic field. Force on a moving charge in a magnetic field. So we studied till now magnetism, but now we are studying moving charges. Moving charges. Okay. So what will happen? We will see in a magnetic field. Any charge, if it moves in a magnetic field, what will happen? By observation, we will see. देखो दो ऑब्जर्वेशन है. देखो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, I put a current carrying wire. Beside me, I put a charge which is at rest. Okay. You tell me, because of current carrying wire, there is a magnetic field. Definitely. Which direction? Thumb indicates the direction of current and curled fingers indicate the direction of magnetic field, right? Magnetic field is into the page, right? When the charge is at rest, there is no force acting on this charge. Magnetic field में कभी भी charge rest में है तो there is no force acting on this charge. They observe that when the charge is at rest, when they on the current, there is a magnetic field, and magnetic field में charge is at rest, there is no force. It is not moving. Okay. Same thing, same current carrying wire. I started moving with some velocity. Charge को some velocity से फेंक रहा हूँ. Then they observed the charge got deflected. Charge got deflected. मतलब whenever charge is in motion, then only the magnetic force is acting on this charge. उसके वजह से some deflection is happening. Okay, that means what is the conclusion? A moving charge experiences a force in a magnetic field. Charge should be in motion. That's why name itself moving charges. Okay, when the charges is in motion, there is a magnetic force acting on this charge. Because of that, there is a deflection. Okay, now we will see what is the formula for magnetic force. क्या है, कैसा है, we have to apply. Okay, so when charge is at rest, there is no force acting on this magnetic force acting on this charge. कबिड चलो. नो नो इसका फोर्स का फॉर्मूला क्या है? देखो, सपोज मान लो द चार्ज is moving with some velocity v in this direction, and magnetic field is like this in this direction. Magnetic field ka symbol is b. Angle between them is theta. Suppose the charges start motion with some velocity this much, and magnetic field is like this, certain angle theta. Then definitely there is a force, right? Whenever charge is in motion, there is a force. That force ka formula hai F is equal to Q into V cross B. F is equal to Q into V cross B. V is the velocity and B is the magnetic field and Q is the charge. Okay, this is the formula for force in vector form. In scalar form, when you expand, Q A cross B is AB sin theta, right? So Q VB sin theta. Theta is the angle between what? Theta is the angle between B and B. Angle between V and B. That is important thing. So force का formula आ गया. एक first formula in this chapter में, moving charges में, in this topic में, F equal to Q VB sin theta or Q into V cross B. And you know this one, force should be perpendicular to velocity, and force is also perpendicular to magnetic field. Because cross product means, right? Cross product means force is perpendicular to velocity and force is perpendicular to magnetic field. Okay. QVB sin theta is a formula. You tell me force, that means here, if you see magnetic field velocity से perpendicular रहने का, like this somewhere. Force either above or below, force रहेगा, which is perpendicular to both magnetic field and velocity. Force should be. Okay. We will see how to find the direction of force, which rule we have to use. Okay, we will see. Okay. You tell me force will be zero in which case में? Force will be zero. Sin 0. Angle is Angle angle zero parallel. or
180 डिग्रीज में इट इज जीरो। और अगर चार्ज देखो वेलोसिटी इज जीरो, चार्ज रेस्ट में द फोर्स इज जीरो, satisfying, right? So write down special cases. When v is zero, v is zero, force is zero. When theta is 0 degrees or 180 degrees. Okay, theta is 0 degrees means the charge moving with some velocity v which is parallel to magnetic field. देखो, even though charge is in motion, but when v and b are angle is zero, then force is zero. Parallel or theta is 180 degrees also. They're anti-parallel बोलते हैं इसको. Okay, so plus q charge is moving with velocity v and magnetic field is like this. Then the force is zero. Okay, parallel or anti-parallel में the even though charge is in motion, the force acting on magnetic force acting on it is zero. There is no force acting on this charge when they are going parallel or anti-parallel. So formula learn करने हैं. F equal to Q into V cross B or QVB sin theta is the formula. Copy it. Now we'll try to see the direction of force. Force का direction कैसा है? Which rule we have to use? So which rule? Anybody याद है? अनु याद है? Which rule? Famous rule है? हाँ? Fleming's left hand rule. No. Or Fleming. Right. Right hand rule है? No, left hand rule नहीं है, right hand rule है. हाँ? We can do it by vector. Okay. Vectorially. देखो सबसे simplest वाला है right hand palm rule. Palm rule is important for this. Total अभी से ending तक right hand palm rule only will go. Total this moving charges में. Okay. So what is the right hand palm rule says? देखो, this four fingers जो भी है, that is showing in the direction of magnetic field, and thumb is a motion of positive charges. Motion of positive charges. Then the palm gives the direction of force. अगर palm इस तरफ है तो inside, इसे outside, ये तो right side, ये तो left side, ऐसा लगाना है. palm किस तरफ दिख रहा है, उस direction the force acting. Okay, right hand palm rule. Olden days में we used to find the force. Tell some rule बोलते तो they tried and this person is very famous, right? Always you'll always put the legs, hands, swimming करके कुछ करके सब कुछ बोलेगा. So he compared and he found this rule, palm rule. Okay. Now we'll see how to find the this by using palm rule. Okay, understood? Four fingers, magnetic field, thumb, motion of positive charges, palm gives the direction of force. Okay. से हम पहले से कॉन्सेंट्रेट करो और जो भी आ जाएगा. ओके, चलो. Find the direction of magnetic force. I'll give some diagrams to try to find the magnetic force. देखो, magnetic field is into the page. Here magnetic field is into the page. And suppose the charge is moving right side with velocity v. Now force direction चाहिए. Force direction चाहिए. Okay. देखो, see हम magnetic field is inwards. Plus q charge is moving with some velocity right side, and the palm indicates the direction of the force. So magnetic field, four fingers magnetic field, charge is going with some velocity v, and palm represents the direction of force. thumb को किस तरफ जाएगा पॉजिटिव चार्ज उस तरफ लगाना पड़ेगा. इस तरफ जा रहे हैं उस तरफ लगा रहे हैं, and force. So force direction is like this. Okay, तो ट्राई करो. magnetic field is inwards. So charge is going with velocity upwards. सेम बोलो, आप ही बोलो. राइट हैंड प्रॉब्लम लगाओ. magnetic field is inverse. फोर फिंगर लगाया, फिक्स कर दिया, एंड चार्ज किस तरफ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं ना. ऊपर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ थंब, और फोर्स किस तरफ ले, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो लेफ्ट साइड. सो दिस डायरेक्शन.
Okay, now try. The magnetic field is coming outwards, मतलब towards you, and charge is going with velocity v. And now tell me direction of force. किस तरफ है? आंसर में ट्राई करो. It's downwards. यस, देखो मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग टुवर्ड्स यू. चार्ज किस तरफ है? राइट साइड जा रहा है ना, तब उस तरफ पॉइंट करो, ऐसा पॉइंट करो डाउनवर्ड्स. ओके, सो फोर्स इज डाउनवर्ड्स. और लगो ये आए तो आपको क्वेश्चंस भी इजी हो जाएगा. So magnetic field is like this, and plus Q charge is moving with velocity v. हाँ सादिक बोलो, which direction the force will be? Magnetic field किधर है? हाँ right side. हाँ and thumb into the one. Okay, so force is inwards. समझ आ रहा है? So ये डायरेक्शन लगाना आने का आपको. ठीक है, ये करो. Suppose I given negative charge into the page, minus Q charge, it is moving with velocity v. Suppose I given the negative charge, आपको क्या करने का? फर्स्ट यू ट्रीट इट एज ए पॉजिटिव चार्ज. आने के बाद फोर्स डायरेक्शन अगर इनवर्स आएगा उसको उल्टा करो आउटवर्ड्स. अगर राइट साइड आएगा, सिंस नेगेटिव चार्ज, उल्टा करके आउट लेफ्ट साइड लिखने का. ओके, नाउ टेल मी किस तरफ जाएगा? Downwards. डाउनवर्ड्स. देखो मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, द वेलोसिटी इज चार्ज इज लाइक दिस, एंड फोर्स इज अपवर्ड्स. बट सिंस इट इज नेगेटिव चार्ज, फोर्स इज डाउनवर्ड्स. नेगेटिव चार्ज का उल्टा लगाने का. Okay, try. See, I'm neutral. So magnetic field is like this. Plus Q charge is moving with velocity v. Force किस तरफ factor है? So downwards. Huh? Downwards. Downwards. साथ ही कर ले. Right hand formula. Don't break your hands. Okay. 0. 0. Because I told you, when charge is moving along the direction of the magnetic field, theta is 0 degrees. When theta is 0, there is no force. नहीं तो we can't change like this. ये तो लगा सकते हैं ऐसा, but इसको क्या करेगा? ब्रेक ऐसा नहीं, परपेंडिकुलर रहने का, right? So force is 0. Theta is, I told right, when theta is 0, parallel or anti-parallel, force is 0. There is no force acting on the charge. Okay, understood? Identity formula. Okay. Now questions करेंगे based on this one. So what is the formula? QVB sin theta. If they given vector form, Q into V cross V करने का, right? चलो करो, नीति करो. Electron is moving northwards with a velocity 10 power of 7 meters per second. Okay, electron है, it is going northwards with a speed 10 power of 7 meters per second. Okay, in a uniform magnetic field 3 Tesla directed eastwards. So magnetic field is like this direction, eastwards में magnetic field is there 3 Tesla. मतलब पूरा magnetic field is in x direction, y direction में जा रहा है. Calculate the instantaneous force on the electron. Simply the charge is moving right, force चाहिए, magnitude बोल दो, हो जाएगा. And charge of the electron, you know, 1.6 in 10 power of minus 19. So same formula use करो. QVB sin theta. Same, tell me theta is how much here? Theta is angle between V and B. देखो V इस तरफ जा रहा है, magnetic field इस तरफ है. Angle between them is 90. सब करो. 4.8 into 10 power minus 12. Okay, newtons. And direction बोलो. Inwards. No. Into the electron है ना, electron is negative charge. right, downwards. Downwards, outwards. Outwards. Okay. Shyam, Q is how much? Electron का charge is how much? 1.6 into 10 to the power minus. See, if you don't talk, no one can help. If you simply बैठ के हाँ कहे तो what is the use of tuition? Tell me. आपको कोशिश करो, wrong है तो wrong, कौन बोलेगा, कौन हंसेगा, no problem.
सात्विक आप भी काम में मत बोलो, आंसर्स बोलो. Only one girl should tell. V is 10 power of 7 into B is 3 into sin 90 is 1. So if you multiply, you will get as 16 is 1.6 into 3 is 4.8 into 10 to the power of minus 12 Newton, and direction is outwards. Right? Why? Magnifil is like this, 4 fingers, charge is going like this, velocity. So upper force is inward into the page, but since a negative charge, it is out of the page. Outwards. QVB sin theta is a formula. एक ही formula अभी तक सीखा. Okay? चलो. A charged particle of mass 5 milligrams and charge this much has velocity. देखो velocity is given in vector form. मतलब formula we have to use in vector. Find out the magnetic force on a charged particle. It's an acceleration. Force and acceleration you want. Magnetic field also given in vector form. खत्म. Is asking force and acceleration. So vector form में formula क्या है? F is equal to Q into V cross B. You know how to do the cross product? मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स मेथड में सॉल्व करने का. सो V क्रॉस B कर रहे हैं हमें टू गेट फोर्स. V इज याद है, V क्रॉस B कैसे करेगा? मॉड I कैप J कैप K कैप. सो पहले V डालने का. V का कोएफिशिएंट्स क्या है? 2 -3 एंड 4. एंड B का I तो नहीं है, 0. J का 3 एंड K का -2. राइट? दिस इज मैग्नीट्यूड. मॉड लगा रहा है डिटरमिनेंट्स मेथड, एंड दिस इज प्लस माइनस प्लस. ओके. सो क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी ऐसे करने का श्रीराम, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे करने का मैट्रिक्स मेथड में. ओके. नाउ फर्स्ट प्लस आई इनटू उसका कॉलम उसका रो बंद कर दो. सो कितना होगा? 3 -3 इंटू -2 इज 6. 6 -12 इज -6. -j इंटू उसका कॉलम उसका रो क्लोज कर दो. उसका कॉलम उसका रो क्लोज कर दो. उसका कॉलम रो. सो कितना? 2 इंटू -2 इज -4 एंड -0. ओके. प्लस k टाइम्स ऑफ, सिमिलरली उसका कॉलम उसका रो निकाल दो. सो k का कॉलम k का रो, k का कॉलम k का रो. सो 2 इंटू 3 6 -0. सो 6. So therefore F is equal to Q is how much? 2 micro, right? 2 into 10 to the power of -6 into V cross B is -6i plus 4j plus 6k. And acceleration will be F by m, force by mass. So mass is 5 milligrams. 2 into 10 to the power of -6 by 5 into 10 to the power of -3 -6i plus 4j plus 6k. So 10 power of -3. So 0.4, right? 0.4 into 10 to the power of -3 into -6i plus 4j plus 6k. Understood? अभी करने का आया बस आपको समझ में आ गया? यस. चलो तो देखते हैं विल डू क्वेश्चंस का. ना करो अभी से. हाँ करो ना. A charged particle is projected in magnetic field. Magnetic field is given vector form. Its acceleration is found to be this much. Find x. X. The given what? Magnetic field is given to you. Pi I cap minus 2j cap. मतलब इस रीजन में magnetic field में a charged particle is projected. At the time they observed the acceleration of the charged particle is xi cap plus phi j cap. He's telling to find the value of x. Not right.
कार्तिक बोलो आंसर। इस रीजन में ही थ्रो ए पार्टिकल, उसका एक्सेलरेशन इतना है, इज टेलिंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो वी डोंट नो द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सेलरेशन। ओके, सो कैसे लेके आएंगे? आई टोल्ड यू व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, q into v cross b, right? Okay, I told you force is perpendicular to velocity and force is also perpendicular to magnetic field, right? If force is perpendicular to magnetic field, that means force ka direction only acceleration will be there. So acceleration is also perpendicular to magnetic field, right or wrong? फोर्स पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा ना, एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। एंड यू नो इन वेक्टर में व्हेन टू आर परपेंडिकुलर दे डॉट प्रोडक्ट इज हाउ मच? 0. सो आपको सिंपली डॉट प्रोडक्ट करके इक्वल टू 0 करो, यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट मालूम है ना, आई डॉट आई इज 1, जी डॉट जे इज 1, सो 5x minus 10 is equal to 0, x equal to 10 by 5 is 2। सो ये रिलेशनशिप आपको लर्न करना, फोर्स से ही आएगा। आया? चलो नेक्स्ट ना करो। करंट कैरिंग 4 एम्पियर करंट है, 0.2 मीटर्स में एक चार्ज जा रहे हैं विथ दैट वेलोसिटी 10⁶ मीटर्स पर सेकंड। ये चार्ज कितना दिया वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम चार्जेस फ्लोइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, राइट? देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। एट दैट टाइम इज टेलिंग टू फाइंड व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। फोर्स फाइंड करो। एंड डायरेक्शन भी बताओ किस तरफ जाएगा। Sir, won't it just be 0? Why 0? Because they both are parallel to each other. Which are parallel to each other? Like the charge and What is the formula? Tell me. Q V B sin theta. Theta is the angle between velocity and magnetic field. देखो, because of this current carrying wire, magnetic field किस तरफ रहेगा? Tell me. Because of this current carrying wire, what is the direction of magnetic field at this point? Tell me. above. Why above? Explain करो. Because of current carrying wire, which rule we have to use? We studied straight wire, circular wire, solenoid. In that way, right hand thumb rule. Right hand thumb rule. Thumb indicates the direction of current and curled fingers indicate the direction of magnetic field. So magnetic field is inwards. Right? So since now tell me direction angle कितना होगा? Magnetic field inside है and velocity is ऊपर है. So angle is how much? Magnetic field inside, the charge is moving like this. 90 है. So we know F is equal to QVB sin 90 is 1. Okay. Q मालूम है, velocity मालूम है, but if I can find the magnetic field at that point, we can get. ये infinite wire है. You know how to find magnetic field, right? Use the formula magnetic field का. So F is equal to 10 power of -5. no, wrong. So 4 into 10 power minus 6. Yes, Tesla. Yeah, Okay. that's- V into So Newton. Force, right? Newton. okay, value final answer बोल रहा है magnetic field I thought. Okay, so magnetic field कितना? mu naught by 4 pi
into 2I by A, right? This is the formula. Now substitute all the values. I मालूम है, A is the 0.2 meters. Q मालूम है, V मालूम है. If you substitute, you will get as 4 into 10 to the power of minus 6 newtons. So since if we don't know the formula now, this one, we cannot able to further, right? So that's why we'll study magnetism first, then moving charges के बारे में. नहीं तो हर बार मैग्नेटिक फील्ड कोई भी सर्कुलर देगा, ये देगा, वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं मालूम है तो we cannot do. So that's why they will go for a magnetism first and then moving charges. Okay. Now chalo. Work done by magnetic force in a moving charge. Concept is सीखो. Work done by magnetic force in a moving charge. Okay, tell me. I told you in the formula mein, force is, what is the meaning? Force is perpendicular to velocity. Force is perpendicular to magnetic field. This one you know it. So suppose velocity is here, force is like this. Right? Force is like this. Okay. So what is the work done formula? Kya hai? Work done formula is, normal formula is F dot S. Okay. Wherever the velocities of the particle is there, उसी direction में displacement होगा. So मैं क्या करूँगा? Displacement of the particle is in the direction of the velocity and force like this. Right? Now what is the work done? Calculate करो. Work done is F dot S. So Fs cos 0, cos 90, right? So it is work done is 0. So magnetic, in order to move the charge, magnetic force is not doing any work. In order to move the charge, magnetic force is not doing any work. Okay, थोड़ा extension करेंगे. We know that work energy theorem, work done by all forces, work energy theorem. Work done by all forces equal to changing kinetic energy. This is 0. K final minus K initial. So therefore, initial kinetic energy is equal to final kinetic energy. Okay. That means I use the formula half mu square is equal to half mv square. So half m cancel. Squares पे cancel. U is equal to v. मतलब indirectly इसका meaning क्या है? Magnitude we are taking. Speed है ना, not velocity, speed है. So initial speed is equal to final speed velocity. See here what is happening is whenever charge is in motion, some force is acting, magnetic force is acting. That magnetic force is not doing any work on it. First condition. And suppose I am throwing a charge with some 10 meters per second inside the magnetic field. आपको deflect होगा, but speed will remain same. 10 है तो 10 ही रहेगा. पूरा magnetic field में magnetic force cannot increase or decrease the speed of the particle. That is important. Okay. ये सब कहानी किधर हुआ टेल में? Where this kahani has done, you saw it anytime. Force लग रहा है, but work done by that force is 0. Okay, and speed remains same. Which any example where this all phenomena will happen in one place? Force लग रहा है, but उसका force का work done is 0. But that speed of the particle will be same. Speed will be same. Where it is happening? It is happening in uniform circular motion. Uniform circular motion. देखो, when a particle is rotating, which force is acting towards center? Centripetal. Centripetal force. The particle is rotating with uniform means same speed में जा रहा है, right? So centripetal force is acting towards center. Now tell me, what is the work done by this force, centripetal force, to move the particle? एक particle of mass m है. देखो, every point of time में force and displacement angle is how much? 0, 90. So what done is how much? 0. So centripetal force is not doing any work on the particle. Okay. Then what is the responsibility of centripetal force? It will change the direction of the particle. It is making to change the direction of the particle
not the speed of the particle. In uniform motion में the particle speed is remains constant but velocity will change. So this all kahani is happening here. देखो, work done by this magnetic force is 0 and in the magnetic field में the speed remains constant. ये पूरा बिट्स में इसमें पूछने वाला है. ओके, ये ऑलरेडी एडवांस में भी आया. आई विल गिव एडवांस क्वेश्चन, यू शुड से. ओके, चलो ये करो. टेल मी एडवांस क्वेश्चन है. थिंक एंड टेल. इलेक्ट्रॉन यू स्पीड से एंटर हो रहे हैं and magnetic field is inside the magnetic field board. He is telling electron exit from a region after certain time with velocity v. Velocity v से exit हो रहा है. Then advanced question. सादिक बोलो. Something you Say want to tell? A. Huh? A. Okay. Sadik. Sir, B. Okay. So why A, why B? Explain. So Sadik, you tell. Why A, B? बोलो. Guessing. हाँ. देखो, whenever it is entering with some velocity u, I told you magnetic force will act, right? Definitely moving charge में magnetic force will act. That force cannot increase or decrease the speed of the particle. वो तो पक्का. So u and velocity v are same, right? Okay. Now we will see the direction of the एक इसका ऊपर force लग रहा है. देखो, force calculate करो एक बार. When electron is going like this, It's downwards. downwards. Yes, Force देखो, is downwards. magnetic field is like this. Electron is entering right side, so I shifted like this. So force is upwards. Since it is negative charge, the force is downwards. So electron will shift like this. So it is y is less than 0 na, greater than 0 na? Downwards है ना? It is less than 0. So first option is right. Advanced question compulsory check करने का. Okay, चलो. Understood it? You can remember this one. चलो. Next. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लॉरेंस फोर्स. आगे और भी डिटेल में सीखने वाला है. लॉरेंस फोर्स एक छोटा सा. लॉरेंस फोर्स में क्या हो रहा है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फील्ड वी स्टडीड, नाउ वी आर स्टडीइंग मैग्नेटिक फील्ड. दोनों कॉम्बिनेशन में चार्ज इफ इट इज मूविंग, नेट फोर्स इज कॉल्ड एज लॉरेंस फोर्स. ओके, यू रिमेंबर दिस फार्मूला? व्हेन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ ए प्लस क्यू चार्ज इज देयर, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? Which force is acting on it? QE is a formula which is in the direction of field. याद है? If it is minus Q, इसके ऊपर फोर्स लगेगा which is in the exactly opposite direction में QE. ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड. Now tell me, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से there is a force, right? And because of force there is the acceleration. So electric field can increase or decrease the speed, but magnetic field cannot increase or decrease the speed of the particle. Okay, and so electric force का फॉर्मूला क्या था? QE. and magnetic force का फॉर्मूला Q into V cross P, vector form में. So net force will be, charge particle net force will be vector sum of electric force plus magnetic force, and this net force is nothing but Lorentz force.
Lorentz force. Lorentz force is a vectorially addition of both electric field and magnetic field. चलो एक क्वेश्चन करो. सो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है उसी डायरेक्शन में चार्ज विल मूव. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो चार्ज विल मूव इन द सेम डायरेक्शन. इफ इट इज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज तो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा. समझ में आ रहा है. सो इफ इट इज डाउनवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्ज विल मूव डाउनवर्ड्स. इफ इट इज अपवर्ड्स अपवर्ड्स जाएगा. बट मैग्नेटिक फील्ड आपको राइट हैंड पाम रूल से चेक करना पड़ेगा. ओके कब चलो आएगा तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. देखो इधर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दिया. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग टुवर्ड्स यू and electric field downwards, magnetic field is like this. Okay, in this region में electron is entering. एक electron है, charge particle is entering in this region. देखो electron is going in this direction and electron is going in this direction. Okay, at that time the correct arrangement is to escape undeviated is. मतलब electron should not escape deflect नहीं होने का. So which condition में deflect नहीं होगा is asking. I'll tell first one, try to do anything. देखो because of electric field द इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, डाउनवर्ड से अपवर्ड सा. बिकॉज ऑफ फोर्स किस तरफ एक्ट कर रहा है, हाँ डाउनवर्ड्स. डाउनवर्ड्स. बिकॉज पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव चार्ज है ना, सो डाउनवर्ड्स इलेक्ट्रिक फोर्स. आई नो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है ना, चेक करो राइट हैंड पाम रूल. देखो मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड्स, द चार्ज इज गोइंग राइट साइड, फोर्स इज लाइक दिस, बट इन नेगेटिव चार्ज फोर्स इज इनवर्ड्स. सो फोर्स इज इनवर्ड्स, मैग्नेटिक फोर्स इज इनवर्ड्स. Whether it can cancel? No, it cannot cancel. एक inside है, एक downward से. Net force तो some direction में आएगा. But we want escape. Electron should not undeviated. Undeviated नहीं होने का. So first one is wrong. Check करो ये दो option में. Tell me which option is right. इसमें electric field is ऊपर. So definitely force acting on the charge is downwards. Fe. Now check magnetic field. Magnetic field is coming towards you. It's upwards. F. Upwards. F is upwards. So in this में chance है to cancel out. Undeviated होगा, right? That means which path it will take now electron? Tell me. Because of magnetic field it is not getting ऊपर नहीं जा रहा है. Because of electric it is not going downwards. It is going straight path. So trajectory is a straight line. Okay, दोनों cancel हो गया. Yeah, so the electron will move in a straight path. So this is answer. Without undeviated it will go. Okay, चलो ना करो. JEE Mains question only करो. A particle of mass m, charge q is in electric and magnetic field. दोनों electric field भी है, magnetic field भी है, दोनों vector form में दिया. Okay, the charge particle is shifted from origin to the point 1, 1. So देखो initially charge is at origin. So origin में 0, 0 plus q charge minus q charge plus q charge. Not mentioned means charge plus q. Okay, this is electric field and magnetic field दोनों है. मतलब x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, पूरा डायरेक्शन जगह में है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड. नाउ चार्ज को I shifted from here to 1, 1 point P. 1, 1 शिफ्ट किया चार्ज को along a straight path. The magnitude of total work done is how much? Total work done is how much? What is the total work done means? Total work done means work done by electric force plus work done by magnetic force. कितना काम किया? You tell me, in order to move the charge from here to here, work done by magnetic force is how much? 0. Magnetic force will not do any work at all, right? Work done is 0. So ये तो 0 है.
मतलब if you can find the work done by electric force, खत्म, that is the total work done. करो, in terms of charge में आएगा, चल आंसर. फाइव क्यू. 5Q. देखो फॉर्मूला क्या है, Fe डॉट S, एंड Fe का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट, Q इंटू E डॉट S, राइट. हाँ, नो E दिया है एंड डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, Q टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2y कैप प्लस 3j कैप डॉट, डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, अपर माइनस मतलब लोअर 1 माइनस 0 आई कैप 1 माइनस 0 जे कैप, सो 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप. ये फॉर्मूला मालूम है ना डिस्प्लेसमेंट का, फाइनल माइनस इनिशियल करने का. नाउ डॉट प्रोडक्ट करो, यू नो डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट आई इज 1, सो q इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज 3, सो 5q इज आंसर, इज द टोटल वर्क डन. So work done by manifold is always zero. आपको अंडरस्टैंड होने का डायरेक्टली आंसर बैट मत करो, अंडरस्टूड, राइट, बिकॉज वी डन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, दैट्स व्हाई इट इज जीरो. So moving charges का formula we learned, one formula only we learned, right, F equal to Q VB sin theta. Now motion of a charged particle is magnetic field. Now magnetic field इस रूम में है, इस रूम में full magnetic field is there. I am throwing a charge like this, like this, like this. उसका मोशन कौन सा, ट्रैजेक्टरी कौन सा है, मतलब इट गो स्ट्रेट लाइन ना, इट विल गो सम अदर डायरेक्शन ना, वी हैव टू सी. ओके, सो हियर वी आर स्टडीइंग थ्री केसेस में पढ़ने वाला है. ओके, फर्स्ट वन, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी व्हेन थीटा इज 0 और एंटी पैरेलल थीटा इज 180 टू द मैग्नेटिक फील्ड, एट दैट टाइम व्हाट इज द motion of a particle, you have to know. Okay, when theta is 0 means, tell me, magnetic field and charge is moving with some velocity v. Okay, so tell me whether force is, how much force is acting, जीरो. अगर एंटी पैरेलल है तो भी इसको चार्ज is moving with velocity v, this angle is 90 180, तो force is 0. So now trajectory बोलो, इसका trajectory क्या, कौन सा, which direction it will go when theta is 0 degrees, it will go in a straight path only, wherever he is throwing that direction only it will go, right, there is no force acting on this charge, right. So what is the कहानी देखो, charge will continue to move in a straight line path, charge will continue to move in a straight line path. This is the case one. Okay, no, second case में जाएंगे. Case 2, when initial velocity is 90 degrees to the magnetic field, 90 degrees, इसका ट्राजेक्टरी कैसा होगा, टेल में, इसका ट्राजेक्टरी, सपोज मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज. ओके, नाउ चार्ज को आई एम थ्रोइंग विथ वेलोसिटी प्लस क्यू चार्ज, आई एम थ्रोइंग विथ वेलोसिटी v, this magnetic field is inverse. Now tell me what is the path it will take, what is the trajectory. सर्कुलर. Okay, देखो we'll see. Magnetic field is inverse,
charge is moving right side, and the force acting on this is upwards. So initially the charge want to go this side, but क्या होगा? Because of that force acting in upward side, it will rotate like this. जाएगा ऐसा. Okay, plus Q charge came up to here, and velocity is here. Okay, again apply. Magnetic field is inwards, velocity is upper, force is like this. The charge want to go like this, but force is acting like this, right? It is making that to turn. ऐसा आ रहा है. Plus Q charge, velocity. Again, magnetic field, force like this. So it want to go straight, but to turn हो जाएगा because of force turn. So it finally forms a circular path. The particle moves in a circular path. So definitely, and इसका force कितना होगा? Force कितना है? Angle is 90, right? Theta is 90 means किसके बीच में? Velocity and magnetic field के बीच में, right? So what is the formula? QVB. Silent is 1, right? QVB is the magnetic force acting when the particle is moving perpendicular to the magnetic field. Perfect. So this magnetic force, when a particle is rotating in a circular path, the magnetic force is nothing but centripetal. It is acting like centripetal force only. Magnetic force is acting like centripetal force. That force is responsible to change the direction of that particle, not speed. Magnetic force cannot change the speed. जो भी magnetic force is acting like centripetal force in this case में, that is responsible to change the direction. That's why velocity is changing every point of time, but speed is remains constant. Okay. Now we are since it is a circular, it has radius r. Now our intention is to find the radius of the circular path. Okay. देखेंगे इसका radius का क्या है, we'll see. ये तो हो गया ना. देखो, I will show in animation form में. देखो, initially I am throwing like this. क्या होगा? ऐसा circular motion में जाएगा. Okay, particle a room में magnetic field ऐसे inverse है ना, zoom बोल के जाएगा. चलो, derivation of radius. Now radius का derivation देखेंगे. I told you when a particle is rotating in circular path, magnetic force is acting like centripetal force. And magnetic force का formula in this case में क्या था? QVB. And centripetal force याद है formula? Centripetal force formula is mv square by r. R. mv square by r. Okay, एक v cancel. R is equal to mv by qb. Very important formula. But by heart these formulas. R is equal to mv by qb. This is the radius of the particle. इसका trajectory भी लिखो. Trajectory is circle. Trajectory is circular. When theta is 0, straight line path. When theta is 90, circular path. याद रखने का. And circular path has a radius. That's why mv by qb we derived. Covered? Okay. Now इसका time period and frequency भी find करेंगे. Time period कितना होगा? Tell me. When the particle is rotating with constant speed and radius is r. So what is the time period formula? Distance by speed, right? Distance कितना होगा? Total distance circular one complete circular में 2 pi r by speed is v. Right? 2 pi r by v. Okay. Now what is r value? We know this formula क्या है? R value is mv by qb. And this is by vv. So vv cancel. Therefore time period का formula है 2 pi m by qb. 2 pi m by qb is the formula for time period. This second case, when the particle is moving perpendicularly, it is taking the circular path. R का formula है mv by qb and time period का formula है 2 pi m by qb. Okay, I'll ask question. Suppose मान लो magnetic field is same inverse है. मैं चार्ज प्लस क्यू चार्ज को फर्स्ट इनिशियली 3 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया. ओके, वो जाके चक्कर मार के आया. टाइम पीरियड
T1 मान लो. ओके, सेम सेकंड में सेम चार्ज को आई एम थ्रोइंग विथ 10 मीटर्स पर सेकंड. ज्यादा स्पीड में थ्रो किया, जूम करके थ्रो किया, वो जाके लॉन चक्कर दूर दूर जाके चक्कर मार के आएगा, राइट. सो टाइम पीरियड इज T2. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज लेसर? सती बोलो. Which one is greater? Which one is lesser? I am throwing a charge with 3 meters per second. It forms a circle and come. And I am throwing with 10 meters per second. It forms a circular and come in magnetic field में. Which one is more? T1 or T2? They're same. बोलो. वो समथिंग बोलेगा, वो तो बोलेगा ऐसे ही. आप बोलो. वो तो ऐसे ही Time हाँ. less than velocity. हाँ, टाइम एक्सप्रेशन में देयर इज नो वेलोसिटी. देन कैसे सेम होगा? कैसे सेम मतलब वेलोसिटी चेंजेस, राइट. सो देन हाउ सेम? कौन सा रेडियस ज्यादा है? रेडियस सेम है, रेडियस भी सेम है. नो, रेडियस का फॉर्मूला क्या है? एम वी बाई क्यू बी, राइट. इट डिपेंड ऑन वेलोसिटी. सो मोर द वेलोसिटी, मोर द टाइम, मोर द रेडियस, राइट. सो ये 10 वाला क्या कर रहा है? ऐसा जाके ऐसा आ रहा है. 3 वाला क्या कर रहा है? ऐसे जाके ऐसा फॉर्म हो रहा है. ओके, सो ये स्पीड ज्यादा है बोल के हम लोग सोचेगा टाइम पीरियड इज मोर, ऐसा नहीं है. ये ज्यादा टाइम मतलब ज्यादा ज्यादा लेके इधर लेके आ रहे हैं ना, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम पीरियड. वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं हो रहा है. सो टाइम पीरियड इज सेम, T1 इक्वल टू T2. Radius will change, mv by qb. So it depends on velocity. More the speed, more the velocity, more the radius, right. More the speed, more the radius. Okay, now frequency क्या होगा? 1 by t. So उल्टा करो, qb by 2 pi m. qb by 2 pi m. Second case में parameters pair setting, that's it. Puppet. Okay. Now angular frequency or angular velocity. Angular frequency or angular velocity को ओमेगा से रिप्रेजेंट करेगा. ओमेगा इज नथिंग बट 2 pi by t. ये पूरा काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में स्टडीड इन द 11th क्लास में. 2 pi f अटल में ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi f इज क्या है? qb by 2m. व्हाट इज फॉर्मूला? टाइम पीरियड इज 2 pi m by qb. सो उल्टा करो, कितना होगा? QB by M. सो सॉल्व किया तो उल्टा किया तो qb by 2 pi m. सो 2 pi कैंसिल, ओमेगा इज qb by m. दिस एंगुलर वेलोसिटी. ये आपको लर्न करना पड़ेगा. कौन सा? रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. उससे अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस आएगा. फॉर्मूला क्या है श्रीराम? फॉर्मूला रेडियस, फॉर्मूला mv by qb. mv by क्यूब. टाइम पीरियड 2 pi m by qb. 2 pi m by, and time period of the frequency you can do ulta, and omega also you can find by using the formula, right. चलो करो ए जे क्वेश्चन. I'll give options. MA VA is less than MB VV. MA VA is greater than MB VB. So magnetic field is coming towards you. एक चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं सम वेलोसिटी से, देन डेफिनेटली वो सर्कुलर पाथ ले रहे हैं. सो पार्टिकल ए लिया एंड बी पाथ लिया. नाउ इसका रिलेशनशिप क्या है? इसका मास है MA, इसका वेलोसिटी है VA, एंड इसका मास है MV, and VB is the velocity of the second particle.
So Sir, we can, second. सेकंड ऑप्शन है तो भाई आपका सर में so second one. ओके So सेकंड है तो we भाई can फर्स्ट है say तो भाई we can say that RA is more than RB, right? आर ए इज ग्रेटर देन आर बी ओके We can say that, right, from the diagram. या डेफिनेटली Okay. Uh, so when we do QVP is equal to MV square by R, we can नहीं find उसका V. नहीं रेडियस का फॉर्मूला मालूम है ना एम वी Okay. बाई क्यू बी एम वी बाई क्यू बी सेम पार्टिकुलर है ना इधर क्या होगा एम बी बाई एम बी क्यू बी वी बी बाई क्यू बी सो क्यू सेम बी सेम कैंसिल सो ग्रेटर देन रेडियस का फॉर्मूला डायरेक्ट वी शुड नॉट डिराइव एम बी बाई क्यू बी इज अ फॉर्मूला फॉर रेडियस ओके चलो now radius we will write in terms of different formulas may we will write okay so radius in terms of linear momentum and kinetic energy easy radius का फॉर्मूला क्या था mv by qb mv by qb and what is momentum MV. mv so mv के जगह में p by qb and momentum in terms of kinetic energy we know from first year under root 2m 2 k MQ. e by qb मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला है अंडर रूट 2m के ई बाई क्यू बी तो के से कर लो 2m के लिखो इजी हो जाएगा 2m के बाई क्यू बी ओके हियर आपको थोड़ा समझ में आने का सम पार्टिकल्स के बारे में इसका क्वेश्चन आएगा भी when they given in terms of kinetic energy means use this type of formula when they given in terms of momentum means use this formula velocity means mv by qb okay so इसका आपको बेसिकली सम पार्टिकल्स का वी हैव टू नो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल का चार्ज एंड मास चाहिए ओके मास बोलो और चार्ज बोलो पहले इस पार्टिकल्स का दे बिकॉज दे विल नॉट गिवन अ क्वेश्चन में यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक थिंग्स एंड यू नो अल्फा इज अ डबली चार्ज हीलियम एटम राइट हाँ टेल में इसका चार्ज ए प्लस सी ए माइनस सी दिस इज अल्फा इज डबली चार्ज हीलियम एटम राइट तो 2. प्लस 2 चार्ज मास का टेल में मास का प्रोटॉन का 1 AMU मान लो and electron is much less than right 1 by 1837 times of AMU मतलब इससे इतना गुना छोटा है मास इलेक्ट्रॉन का एंड इसका टेल में इसका कितना मास है अल्फा पार्टिकल का डबली 4. चार्ज हीलियम एटम राइट सो हीलियम का एटॉमिक मास इज हीलियम का मास इज 4 AMU लगा 4 AMU हाइड्रोजन हीलियम राइट 2 and 4 इज अ मास नंबर सो ये पार्टिकल्स का यूज करके क्वेश्चंस करेंगे so radius in terms of momentum radius in terms of kinetic energy we done copied I करो electron proton and alpha having same kinetic energy so the particles are moving in a magnetic field same kinetic energy में जा रहे हैं and moving in a circular orbits all are moving in circular orbits उसका radius are given I want the relationship between them which is greater which is lesser ऐसे चाहिए so since they given same kinetic energy radius in terms of kinetic energy use करो and solve so electron proton alpha particle का रेडियस का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करो एंड विच वन इज ग्रेटर विच वन इज लेसर
Is it Rp is equal to R alpha, R P is equal to R alpha. which is both of them are greater than Re. Yes, correct. Sridham. Radius का formula we have to use under root 2mk by qb. इन सभी का is to under root 2mk by qb and under root 2mk by qb. कौन सा सेम है? All particles having same kinetic energy. So k cancel. So 2 can cancel. Mass will also same है. Okay. Now we know the mass and charge of the particles, right? इसका mass कितना होगा? Under root electron का we know 1 by 1837 by charges E or minus is to under root mass कितना है? 1 by charges E alpha का under root mass is 4 by charge is 2e. So E cancel. So in this may if you see root 4 is 2 by 2 is 1. So a भी 1 है, a भी 1 है रेडियस. मतलब इसका सेम है. ए वाला 1 by 1837, right? So ये बहुत लेस है. So answer is RE is less than RP is equal to R alpha. तो मेरा चलो ये फॉर्मूला याद है सानवी in terms of accelerating potential फॉर्मूला याद है radius in terms of accelerating potential. Okay, we'll see. चलो लिखो radius in terms of accelerating voltage. Radius in terms of accelerating voltage. Okay, suppose मान लो प्लस क्यू चार्ज है. It is moving from potential 0 to V. V is a voltage or potential. Okay. Now we already know how to find the work done. Tell me how to find work done when the charge is moving from one potential to other potential. We have a potential difference ka definition, right? So V final minus V initial is equal to work done to move from here to here upon charge. So W is equal to QV. Work done is QV. And you know work done is nothing but changing kinetic energy. Work done is nothing but changing kinetic energy is equal to QV and Q final minus Q initial. Initial kinetic energy मान लो 0 है. Initially it is 0. So therefore kinetic energy is nothing but QV. Now substitute in the formula. R का formula in terms of kinetic energy क्या है? Under root 2mk by QB. So R is equal to under root 2m QV by QB. राइट के की जगह मैं क्यू लगा रहा हूँ ए इनसाइड ले रहा हूँ आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2m/q/v बाई q² b². सो q कैंसिल. सो खत्म. आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2mv बाई q/v². is the formula in terms of accelerating potential. Okay. चलो now इसका फॉर्मूला ए वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. डोंट थिंक ऑफ वेलोसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस है. ओके चलो फॉर्मूला शीट में भी ये डाला, इसमें लिखो पोटेंशियल डिफरेंस बोल के फॉर्मूला शीट में ऐड कर लो. पोटेंशियल डिफरेंस मतलब व्हेनेवर दे गिवन द like voltage इतना वोल्टेज 10 volts 20 volts and that V is called as potential difference बोल के लिख लो फॉर्मूला शीट में. कौन सा 16th B बिट 16th B में फॉर्मूला. चलो ना करो. JEE mains question. Proton and alpha particle masses are given, charges are given, or accelerate from rest to a potential difference V. A uniform magnitude field is set up perpendicular to velocities. Is asking a ratio of the radius of P
proton to the alpha is how much? I want radius of proton to radius of alpha is how much? Because it is accelerated from rest and through a potential difference v. Well, all are accelerating with potential difference v only. Okay, so we have to use in terms of potential formula. Formula क्या है? Under root 2mv by qb square by इसका under root 2mv by qb square. Which one is same? Magnetic field is same, right? So magnetic field तो निकल जाएगा. So, किस कौन सा हाँ 1:1. 1:1 है, no? वही same ऐसा नहीं है. The I mass know. of the proton is different, right? So ये वाला and charge of the proton is different and mass of alpha different है, charge of alpha is different है. So v cancel, 2 cancel, b square cancel. No, solve करो. Under root proton का mass is 1:2. 1 by इसका e only by under root mass of alpha is 4 by q of alpha is 2e. Right? Now solve करो. E also get cancel. So 2 1 by root 2. Right? This is 1. ये वाला सेकंड केस का करने समय थोड़ा और भी बाकी है. एनर्जी है और थोड़ा कल करेंगे. श्रीराम एनर्जी है, सुनने का बोर लग रहा है. सानवे एनर्जी है, सात्विक एनर्जी है. बिकॉज अभी थोड़ा नया टॉपिक में जाने वाला हूँ. ओके, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, एडवांस लेवल टॉपिक है. ओके, एनर्जी है तो करेंगे. ओके, चलो. सपोज इनिशियल चार्ज इज आउटसाइड द रीजन. वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक अंडरस्टैंड करो. एक प्रॉब्लम किया तो दूसरा प्रॉब्लम पूरा आ जाएगा आपको. ओके, इनिशियल चार्ज अभी तक क्या है, रूम में मैं चार्ज को फेंका, राइट. बट अभी मैं बाहर से फेंक रहा हूँ इनसाइड द रूम को. एट द टाइम कौन सा पाथ लेगा, पाथ लिया तो कितना टाइम लगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा. ओके, चलो करो. Find the time taken by the charge q plus q to leave the field region. Okay, I am throwing with velocity v at an angle theta. Okay, कितना टाइम लगा to leave the field region, to leave the field region. Okay, first of all tell me force किस तरफ act होगा. Force किस तरफ act होगा. देखो magnetic field is like this, velocity is like this, force is like this. So charge will not go straight, right? It will take the turn. And which path it will take? Velocity and magnetic field are perpendicular, right? So which path will take? It is circular motion, right? So because of force it will turn, right? So क्या होगा, ये जाएगा 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 इधर से बाहर निकलेगा. ओके, मेरे को कितना टाइम लगा टू लीव द फील्ड रीजन. 10 सेकंड्स है, 20 सेकंड्स है, ऐसा कितना टाइम लगा टू लीव द फील्ड रीजन. एंड इधर सिमेट्री है. Whatever the velocity you are throwing, the speed remains same, right? V will be there and same angle में थीटा से बाहर आ जाएगा, right? थीटा से बाहर आ जाएगा. Okay, now I applied the force direction. Magnetic field is inverse, charge is like this, force is like this, right? That means center will be outside or inside. Center of the circle, इस circle का center is outside or inside. Magnetic field is inverse, ये वाला, and forces of outwards. So here आपको center आएगा. Okay, now join the 2 points, this path and this path. Join कर रहा हूँ. Okay, now our intention is to find कितना time लगा to come out from the magnetic field. मतलब आपको ये एंगल फाइंड करने का. Your intention is to find कितना एंगल घुमा है पार्टिकल, कितना एंगल घुमा, देन विल गेट टाइम पेड इजीली. वो एंगल इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एवरी टाइम. ओके, ओके, नाउ यू टेल मी. नाउ सिमेट्री लगाओ. नाउ सिमेट्री लगा के ये एंगल फाइंड करो, ये एंगल फाइंड करो. देन आई कैन गेट दिस एंगल इजीली. दिस इज रेडियस. सेंटर टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस.
and this also radius. Okay, radius and tangent are what? Radius and this tangent, right? Circle ka perpendicular. We studied in 10th class, right? Radius and tangent are perpendicular. Okay. Now this and ये वाला perpendicular है, ये वाला perpendicular है, right? X axis, Y axis, right? Perpendicular. If this is theta, this angle is how much? If this is theta, this is 90. This will be how much? बोलो. ये थीटा है, छोटा एंगल है थीटा. 90 ये minus. टोटल मिलके 90 है. So this angle is 90 minus theta. Okay. Now radius and tangent are perpendicular, right? Now this is 90 minus theta. This will be how much? दोनों ऐड करने से 90 आने का थीटा, राइट? सेम सिमेट्री इधर भी लगाए तो इधर भी सेम रेडियस एंड टैंजेंट पूरा 90 लगा के सॉल्व किया तो ये भी थीटा आएगा, बिकॉज ये 90 माइनस थीटा है. इफ दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस विल बी इन एंगल सम प्रॉपर्टी 180, राइट? पाई माइनस 2 थीटा, 180 नथिंग बट पाई. So angle sum property, this plus this plus this is 180. So theta plus theta, 2 theta minus 2 theta cancel, pi आएगा, right? So angle आ गया, angle कितना angle घुमा आ गया. And now we are trying to find the time period का. Okay, you tell me one complete revolution is how much angle? One complete revolution is how much angle? 2 pi. 2 pi. 2 pi radians को in terms of radians I'm telling, 2 pi radians को time कितना लगा, time period कितना लगा? 2 pi m by qb. This is the formula we learned. This is for one complete revolution of the circle. This is radians. 1 radian का कितना होगा? 2 pi get cancel. m by qb 1 radian का. अब कितना रेडियन घुमा? पाई माइनस 2 थीटा घुमा. सो कितना होगा? m by qb times पाई माइनस 2 थीटा. This is the time period. This is the answer. So अंडरस्टैंड करो, ये बार से थ्रो किया, कितना टाइम लगा मींस m by qb टाइम्स पाई माइनस 2 थीटा. Okay, so always our intention is to find the angle with which the particle is rotating. So इसके लिए शॉर्टकट आपको याद रखना पड़ेगा. डायरेक्टली करने से अच्छा आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला है थीटा m by qb यूज करो ऑलवेज. थीटा m by qb. देखो m by qb तो बाहर रहेगा ऑलवेज. थीटा फाइंड करो, सब करो, खत्म. थीटा m by qb. By using geometry, try to find theta which the particle is rotating, and theta m by qb you have to use always. Okay, चलो next question करेंगे based on this only. करो. Find the time taken to leave. Okay. So first check करो force किस तरफ है and center किस तरफ है. Tell me force किस तरफ जा रहा है? Magnetic field is inverse, velocity is like this, force is like this, right? Force का direction only center रहेगा, because centripetal force is towards center, right? So center will be there inside or outside? No, inside रहेगा. Okay, see जब आप horizontal throw करेगा then only it forms a semicircle. याद रखो, when you throw exactly horizontal, theta is 0 degrees, at that time it forms semicircle, center will lie on this line. Other than that it will be outside or inside, anything can be happen. Okay, now अभी center इधर है, इधर है. Okay, center is here. So definitely ये जाएगा फर्स्ट, ये जाएगा 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 इधर से आएगा. एंड स्पीड सेम है v, एंड एंगल कितना है? थीटा, राइट? ये इस है ना सिमेट्री, नीचे आ जाओ, नीचे कर लो, हो जाएगा. ये जाएगा 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 इधर से नीचे आ जाएगा विद वेलोसिटी v. तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है? नीचे नीचे है ना, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है? थीटा, राइट? सिमेट्री लगा रहा हूं because the magnetic force cannot change the speed of the particle, right? So v and theta are the same. Center is somewhere here. So join the two points and try to get the by using the dimensions का, मतलब एंगल कितना फाइंड करो, खत्म हो जाएगा. So this is one, and this radius, this radius.
आपको कौन सा एंगल फाइंड करेंगे ना, वो ये पार्टिकल किधर घुमा, ऐसा घुमा ना, सो दिस एंगल आई वांट टू फाइंड। देन आपको थीटा एम बाई क्यू भी यूज करने वाला है। ओके, बट उसके लिए आपको इनसाइड एंगल आ गया तो देन ओनली सब्ट्रैक्ट 2 पाई माइनस क्या तो आ जाएगा ना। सो इनसाइड एंगल फाइंड करो। हाँ ना, अप्लाई करो, सादिक बोलो। दिस इज थीटा, रेडियस एंड tangent आर परपेंडिकुलर। हाँ, नो दिस एंगल इज हाउ मच? 90 minus theta. 180 माइनस थीटा ना, 90 90 minus. माइनस थीटा। ओके, मतलब उधर 90 माइनस थीटा। ओके, देन ऊपर विल बी ये 90 है ना, मतलब इधर इधर से पूरा 90 है ना। Yes. दिस 90 माइनस थीटा मींस दिस एंगल इज थीटा, राइट? नो दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। नो ये कितना होगा, कितना एंगल ये वाला? पाई माइनस 2 थीटा। नो सब्ट्रैक्ट करो टू गेट दिस एंगल। नो टाइम पीरियड फाइंड करो। आउटसाइड एंगल कितना होगा? टोटल 360, राइट? 2 पाई माइनस पाई प्लस 2 थीटा, मतलब 2 पाई माइनस Pi, पाई इज पाई प्लस, हाँ कितना? m by qb into pi plus 2 theta. हाँ, पाई प्लस 2 थीटा। सो टाइम पीरियड इज थीटा एम बाई क्यूबी, राइट, शॉर्ट फॉर्म। सो टाइम पीरियड इज t pi plus 2 theta into m by cube is answer. Theta m by cube is a formula better learn. चलो, now we have to go for the, ठीक है, वन मोर क्वेश्चन करेंगे, आ जाएगा। समझ में आ रहा है पहला? ओके, ट्राई करो थोड़ा एडवांस लेवल में क्वेश्चन। सी ऐसा क्वेश्चन आप दे मेंस में भी है। सी चैप्टर में ये क्वेश्चन आएगा, उसमें ये क्वेश्चन दिया तो क्या कर सकते हैं? अभी टोटल चैप्टर इतना फॉर्मूला इतना पढ़ के भी अब गया काम से, मतलब ये कोई भी, दैट्स व्हाई डोंट लीव कॉर्नर कॉर्नर आल्सो, एनीथिंग एनीथिंग कैन हैपन। ओके, दैट्स व्हाई ट्राई टू लर्न। सी जेई मेंस करने से, आई एम नॉट टेलिंग दैट ओनली एडवांस आने का, ऐसा नहीं है। जेई मेंस करने से नाउ विद इन 2-3 मंथ्स में यू आर राइटिंग ऑल कॉलेज एग्जाम्स, ऑल मणिपाल you're writing, Vienna, क्या है college, some colleges are there, you're writing all colleges, you're writing, you will apply, go on applying the colleges, because you will not depend on only one college, right? JEE mains के ऊपर NIT पर depend on all colleges will apply at that time, concept is same. And even though you want to take any branch also, after writing the exam, based on your marks they will mail, we can offer EC in our college में, we can't offer CSC, ऐसे बोलेगा रेडली, बेस्ड ऑन द मार्क्स के हिसाब से। सो व्हाट आर द कॉलेज, मतलब वी शुड वेट। एग्जाम भी कैसे होगा मालूम है? लोकल में होगा, जाएगा संडे जाएगा, इधर लिखेगा, विद इन 1 वीक में दे विल टेल द रिजल्ट, मेल में आ जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस वन, खत्म। So if and that do they'll give time only. What they'll give, within 15 days you have to pay the money. The seat will be registered. Otherwise, lost. Your seat will be lost बोलेगा। तो ये टेंशन रहेगा, इधर करूं, उधर पे करने का, इधर पे करने का, ऐसा रहेगा पूरा। सो अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, सीखो। सो मेनी कंपनीज में, सो मेनी कॉलेज में विल गेट अ सीट इन दिस में। ओके, सो फर्स्ट प्रेफरेंस इज जेईई मेंस एंड एडवांस का ट्राई प्रीफर कर लो पूरा। एंड बिटसैट इज आल्सो इज देयर, बिटसैट इज अ वेरी गुड एग्जाम, असल उसी दिन में आ जाएगा, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी व्हेन यू गेट अ गुड स्कोर ऑन द सेम इंस्टेंट में। देन बाय सीइंग द लास्ट 5 years स्कोर में वी कैन नो विच ब्रांच आल्सो विल गेट बोल के, राइट? चलो, ये लास्ट क्वेश्चन करो, हो जाएगा। Find the angle of deviation when the charge emerges out of the field. Angle of deviation means आपको इनिशियल एंगल किस तरफ जा रहे हैं, फाइनल एंगल किस तरफ जा रहे हैं, उन दोनों को डिफरेंस इज नथिंग बट एंगल ऑफ डिविएशन। सपोज इनिशियल एंगल इज गोइंग लाइक दिस, फाइनल एंगल इज गोइंग लाइक दिस, सो एंगल ऑफ डिविएशन विल बी हाउ मेनी डिग्रीज? 180 डिग्रीज, ऐसा। ओके, इफ इनिशियल एंगल लाइक दिस, फाइनल एंगल इज लाइक दिस, सो एंगल बिटवीन देम इज 90, ऐसा एंगल ऑफ डिविएशन। एंड देन टाइम पीरियड इज दिस वन। हाँ करो, ट्राई करो।
हाँ, so find the time spent by the charge in the field. कितना टाइम लगा in each case? mv not by qb. मतलब you tell me I'm throwing a charge with some velocity v. A length of the magnetic field है, length of the magnetic field का. A lengths are given to you. These are lengths of the magnetic field. See, you tell me length अगर मैं increase करूंगा, it has a chance to rotate. If मैं length को decrease करूंगा, ये क्या होगा? It want to go circular, semi-circular path, but it will go away. It will come out from the magnetic field, right? So based on the length, the charge का turning point वगैरह depend होगा. Okay. Now try करो. When L, this L value is, tell me, L is this formula किसका formula है? mv not by qb. Radius. Radius, right? मतलब first one में L is equal to R. L is equal to R. Can you tell me what will be the time period? L equal to R. See, definitely I told you, whenever charge is moving horizontally with some velocity v naught, center will be lies on this only, because semicircle जाएगा ना, semicircle जाने के लिए. But exactly when length is equal to R, वो कैसे जाएगा मालूम है? जाएगा 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 exactly ये it want to rotate, but magnetic field vanish है ना, it will go straight only. There is no force acting on this that time, right? It is not able to rotate also, right? It will go straight. Okay, at that time, because B इधर magnetic field नहीं है, it want to rotate, but magnetic field is not there. It will continue in the same path only. In this case में exactly मतलब L equal to R है तो L equal to R. हाँ, now tell me इसका time period कितना होगा? First case में, if I join a center to circumference, is nothing but radius, right? Center to circumference is nothing but radius, and angle is how much? Tell me, angle is how much? The angle Pi. 90. Okay. Now tell कितना angle घुमा no? कितना angle घुमा? Pi by 2 angle घुमा. So time period is how much? M by qb pi by 2. M by qb times pi by 2. And angle of deviation means theta is how much? Kitna angle? Initial angle is 0. Final angle is like this. So angle of deviation is 90 degrees. So theta is 90. First case में. आपको ये चार्ज को घुमाने के लिए स्पेस देने का. If you give larger way में, it will go and complete the semicircle. If you are giving less space, it cannot make a semicircle. समझ में आ रहा है? चार्ज पार्टिकल घूमने के लिए देने का, राइट? सो फर्स्ट केस में एग्जैक्टली दिया, सो उधर जाके इधर निकल जाएगा, राइट? रेडियस में. ओके, नाउ टेल मी सेकंड वन क्या है? mv नॉट बाई 2 qv नॉट, मतलब इट इज रेडियस का क्या हुआ? L is equal to length, right? L is equal to, this is what? mv R नॉट by- बाई qb means r by 2. हाँ, इसका डायग्राम कैसा रहेगा? r by 2 means और भी नजदीक दे दिया ना, whether it forms कनिसम ये इधर तक आएगा और लेस आएगा, टेल में. Less. हाँ, so this is r by 2, right? हाँ, then कैसा रहेगा डायग्राम, कैसा रहेगा टेल में? It'll be a straight line. देखो, सॉरी, फर्स्ट वन आ गया ना, सेकंड वन. मान लो ये बहुत लेस है, रेडियस भी नहीं है, रेडियस तक भी नहीं है, ये बहुत लेस है, तो क्या होगा मालूम है? इट वांट टू मेक द सेमी सर्कुलर पाथ, बट ऐसे निकल जाएगा, बिकॉज ये बहुत लेस स्पेस है. ये जाएगा वही डायरेक्शन में निकल जाएगा, बिकॉज बी माइनस है, वही डायरेक्शन में चले जाएगा. सी बिफोर क्या था, इधर एग्जैक्टली आर तक आ गया, आर तक आने के बाद इट वांट टू रोटेट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो इट विल गो स्ट्रेट. बट इसमें क्या होगा, एंगल में चले जाएगा, सर्टेन एंगल में जाएगा, दैट इज थीटा, दिस एंगल. ओके, वो थीटा फाइंड करने का सेंटर विल बी हियर, समवेयर हियर, बिकॉज सेमी सर्किल फॉर्म नहीं होगा अभी तक. ओके,
हाँ टेल नाउ इंटेंशन इज टू फाइंड थीटा. सो आपको क्या करने का, इधर से ज्वाइन किया सेंटर, दिस रेडियस, दिस एंगल चाहिए, दिस एंगल चाहिए. ये पार्टिकल कितना एंगल घुमा, दैट एंगल वी वांट. हाँ ट्राई करो. वी हैव टू फाइंड दैट एंगल. सो देखो दिस इज व्हाट, if I join a line, if I join perpendicular line, this how much, this length is how much, r by 2, this length is r by 2, and this is r, this r. Find this angle find करो. देखो टेल में ये भी रहेगा. देखो this 90, this is theta, this will be 90 minus theta. Okay, and this angle कितना होगा, ये angle है how much, because radius and tangent are perpendicular. ये 90 minus theta means this is theta. समझ आ रहा है. हाँ, if this is theta, देखो दोनों parallel है, ये भी theta है. So what is sin theta? The theta only we want to find, right? Theta only we want to find. So sin theta is how much? 1/2. Sin theta r by 2, right? R by 2 by opposite by hypotenuse, right? By r. So 1/2. 1/2 means theta is 30 degrees, means pi by 6. So pi by 6 angle घुमा. देखो अभी तक पहले वाला आपको कितना एंगल आया, फर्स्ट वन इज हाउ मच, इट इज पाई बाय 2. देखो ये उधर तक आया, बट इधर लेस है, 30 डिग्री से घूमा, ओनली 30 डिग्री घूम के बाहर निकल गया. ओके, नाउ व्हाट इज द टाइम पीरियड, m by qb टाइम्स थीटा इज pi by 6, इतना टाइम पीरियड. ओके, नाउ करो लास्ट वन, आप भी करो, देख रहे हैं ये करो. नहीं ये नहीं है, ये वाला समथिंग मिस्टेक है. वो वाला सी डबल द रेडियस क्या होगा, डेफिनेटली इट फॉर्म्स ए कंप्लीट सर्कुलर पाथ. देन एंगल कितना होगा, टेल में. एंगल इज कंप्लीट सेमी सर्कुलर पाथ इज हाउ मच, पाई. देन टाइम पीरियड कितना होगा, m by qb qb pi. टाइम्स पाई. समझ में आ रहा है. ठीक है, आपको ये क्या हो गया. हाँ सी दिस इज 2r, लेंथ इज इक्वल 2r. 2r बोल तो बहुत स्पेस है आपको. डेफिनेटली इट फॉर्म्स ए कंप्लीट पाथ इज थीटा इज पाई. So time period is simply m by qb times pi. The time period. समझ में आ रहा है. Yes. This is आपको circular path second case done. Second case done. Now we have to go for the third case. First case में क्या सीखा हम लोग? First case में we learned when theta is 0 degrees. Second case में theta is 90 degrees. Then circular path लिया, and circular path में we learned about radius, time period, everything we learned, right? Now third case जाने वाला है. That is when initial velocity is at some angle theta. When initial velocity is at some angle theta. पहले सीधा गया, बाद परपेंडिकुलर गया. Now any angle, certain angle theta. Okay. Now if I take any components, if I take the components, tell me v का SRF component क्या होगा? v का SRF component is v cos theta. Wherever theta is there, उस तरफ cos आएगा. And इसका perpendicular will be v sin theta. Now देखो v cos theta component, see after splitting इसका कुछ काम नहीं है, v का कुछ काम नहीं है. v cos theta component is in the direction of magnetic field. This component का वजह से the charge want to go which direction? Because of this component, the charge want to go in a, because Straight. angle is 0, right? Straight line path, right? And because of this component, which is perpendicular to magnetic field, which direction it want to go? Which shape it want to go? Because of vertical component. Tell me.
देखो when velocity and magnetic field is angle is 90 degrees, 90 degrees. At that time, what is the path? Tell me which path it will take. अभी तक सीखा ना वही है. When theta is 90 degrees, what is which path it will take? Circular path. That means charge को दो path it want to go. It want to go straight. It want to go circular path. So resultant direction कैसे जाएगा मालूम है? It will go in a helical path. देखो it is going straight also, it is going circular also. This is called helix बोलते हैं. Third, when certain angle theta में गए तो उसको helical path बोलते हैं. Helical path मतलब सर्किल भी घूमेगा, स्ट्रेट भी जाएगा, राइट? हेलिकल पाथ. नाउ हियर वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट. देखो सर्कुलर पाथ है ना, डेफिनेटली इसका भी रेडियस चाहिए. छोड़ने का नहीं है. इसका भी रेडियस, इसका भी टाइम पीरियड, इसका भी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने वाले. मतलब इतना इजी सोच रहे हैं क्या फिजिक्स का? ये सब कुछ डायरेक्ट सिंपली इन 10th क्लास जैसा डायरेक्टली वन लाइट चैप्टर में 2 फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिसिटी में 4-5 फॉर्मूला है. ऐसा 10th क्लास का. ये 11th 12th में ऐसा ही रहेगा. फॉर्मूला बहुत सारे ज्यादा है, डेप्थ में जाना पड़ेगा. अरे ये सब छोड़ के या हो गया ऐसा चैप्टर खत्म करो बोलते कैसे खत्म कर रहे हो? डिटेल में जाना पड़ेगा. ओके चलो दिस पाथ. देखो हेलिकल पाथ, जुम जुम जुम. इसको मैं क्या करूंगा? देखो इस कंपोनेंट को आई कॉल एज वी पैरेलल. वाई? वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, वी पैरेलल बोलूंगा. इस कंपोनेंट को आई कॉल एज वी परपेंडिकुलर. वी परपेंडिकुलर. सो फाइनली थर्ड केस में हेलिकल, फर्स्ट केस में स्ट्रेट लाइन पाथ, सेकंड केस में सर्कुलर पाथ, थर्ड केस में हेलिकल पाथ. ओके चलो हेलिकल पाथ ऐसा है ना. चलो now we'll try to calculate the radius of circular path. Radius of easy now. Radius of circular path. Because of which component it is going circular path? Tell me which component की वजह से? V perpendicular component, right? V sin theta की वजह से, right? So radius का magnetic same formula we are using. Magnetic force is equal to centripetal force. And magnetic force का formula क्या है? QVB sin theta, right? Is equal to, tell me. QVB sin theta is equal to, tell me what is the formula? सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला है mv स्क्वायर पे यार, यूज करो. एंड mv स्क्वायर बाय r. देखो v बोल तो कौन सा कंपोनेंट का यूज करेंगे? v sin theta आई एम यूजिंग v sin theta बिकॉज़ v sin theta का वजह से ओनली इज रोटेटिंग, राइट? दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग v sin theta. थीटा 90 नहीं है इधर. ओके हां नाउ टेल मी v के जगह में अगेन यूज करो दिस वन, राइट? v sin theta, v sin theta होल स्क्वायर. देयरफॉर रेडियस कितना होगा? टेल मी. r इज इक्वल टू, देखो एक v कैंसिल हो जाएगा, sin theta कैंसिल हो जाएगा, एक निकल जाएगा. ओके सो r इज इक्वल टू m v sin theta by qb. एंड व्हाट इज v sin theta? नथिंग बट v परपेंडिकुलर. सो रेडियस का फॉर्मूला है m v परपेंडिकुलर by qb. m v परपेंडिकुलर by qb is the formula for radius. m v परपेंडिकुलर by qb. सो नॉर्मल फॉर्मूला क्या है रेडियस का? एम वी बाई क्यू बी, राइट? यार वी परपेंडिकुलर आएगा. सी ऐसे लर्न करो, वी परपेंडिकुलर बोल के लर्न करो. बिकॉज वी आर किससे परपेंडिकुलर रहने का? वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर रहने का रेडियस. एंड टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, राइट? सो फॉर्मूला इज सेम 2 पाई m बाई क्यू बी. एंड टाइम पीरियड आ गए तो फ्रीक्वेंसी सेम क्यू बी बाई 2 पाई m. ये फ्रीक्वेंसी आ गया तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? क्यू बी बाई एम, राइट? खत्म, फॉर्मूला सेम. ओके हेलिक्स का we studied 3 cases only. First case, second case, third case. Third case is helix shape. Whenever charge is moving at certain angle theta, it forms a helix shape. Okay. So इसमें they will ask some one terminology we call copy it here तक.
ओके, इधर एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी पूछेगा, दैट इज कॉल्ड पिच। पिच मीन्स क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड। देखो, सपोज इधर से स्टार्ट हुआ कि वन टाइम पीरियड में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किया, ट्रैवल किया, इधर से इधर तक गया ना, दिस इज कॉल्ड पिच। इधर से स्टार्ट हुआ, आगे जा रहे, इधर से इधर तक आने टाइम में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का ट्रैवल किया, दैट इज कॉल्ड पिच। एंड पिच इज डिस्टेंस, राइट? सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम। सो पिच इज इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सा यूज करने वाला है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है? विच कंपोनेंट की वजह से पिच में जा रहा है, आगे जा रहा है? horizontal component, right? V parallel component. So V parallel into time. So V parallel in this case में V cos theta into time is 2 pi m by qb. This pitch. कदम case 3 done. So इसका न्यूमेरिकल्स कल करेंगे. Okay. इन लोग को नहीं तो